Hi, I'm Vivin Nisena and you're watching. पापा मुंह में मच्छर घुस जाएगा। Здравствуйте, дорогие друзья! Намасте из Индии. Первое, хочу поздравить моих прекрасных подписчиц, наших мам, бабушек, сестер, наших дочерей и подруг с праздником 8 марта. Пусть этот день принесет вам радость, улыбки, теплоту и любовь. А в сегодняшнем выпуске вы узнаете: Вивиан Сена и его путь в кино, будет ли он принимать участие в шоу Кхатроке Кхилари 15, Барун Сопти и его новый проект, Абишек Баччан, отец-одиночка для дочери, не пугайтесь, не в реальности, а в фильме. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Самый ожидаемый сериал Netflix «Кохра» возвращается со вторым сезоном, обещает еще больше тайн, эмоциональной драмы и новых лиц. Первый сезон шоу завоевал огромную популярность. We're coming back with the second season. First season was surprisingly well liked, and that's why we got to make the second one. И лидировал на Netflix в течение 2 недель. Он также был популярен в других странах Южной Азии и на Ближнем Востоке, поскольку в первом сезоне была раскрыта тайна жениха, найденного мертвым за несколько дней до свадьбы. Во втором сезоне история сосредоточена вокруг женщины, которая разошлась со своим мужем и была жестоко убита в доме своего брата. В новом сезоне участвуют талантливые актеры, такие как Мона Сингх в роли полицейского, а Барун Сопти возвращается к своей роли. Он был известен по образу молодого офицера полиции. На данный момент точная дата выхода второго сезона Кохра, то есть Туман, официально не объявлена. Однако Netflix подтвердил, что сериал скоро выйдет на их платформе, а тизеры, опубликованные в X в августе 24 и феврале 25 года, указывают на возможное скорое объявление. Различные интернет-источники предполагают релиз в середине 25 года, но без официального подтверждения от Netflix или создателей шоу это остается лишь догадкой. Актер Абишек Баччан покорил сердца зрителей своей игрой в фильме «I Want to Talk». В 2025 году он снова исполнит главную роль в фильме, исследующем динамику отношений отца и дочери. Картина под названием «Be Happy» также включает в свой актерский состав Нуру Фатеги, Инайт Верму и Насара в важных ролях. Режиссером выступит Ремо Д'Суза. चलोगी मुंबई मेरे साथ? पापा आप बिल्कुल भी अच्छे डांसर नहीं हो, आपसे नहीं हो पाएगा। Трейлер Be Happy демонстрирует эмоциональное и юмористическое путешествие Шивы и его талантливой и амбициозной дочери, которая мечтает выиграть танцевальное реалити-шоу. Фильм Be Happy, продюсером которого выступила жена Ремо Д'Сузы, Лизель, выйдет на платформе Amazon Prime Video 14 марта. आप अपना मिस्टर परफेक्ट का टैग बचाने के लिए टिकट टू फिनाले का टिकट कुर्बान किया है। वो मैंने जो भी किया आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ अपॉलजी, वो एक अपॉलजी थी कि भाई मैं सॉरी बोलता हूँ. Вивиан Сена получил огромную любовь от поклонников после своего появления в Big Boss 18, хотя он давно работает в индустрии и снимался в различных шоу. Участие в скандальном реалити-шоу вновь сделало его популярным. Однако успех не проходил легко, и Вивиан не стал исключением. В недавнем интервью он рассказал, что в начале карьеры получил от 300 до 400 отказов. I want to know, जब आप आए थे, your parents also came to Mumbai with you या आप अकेले आए थे? नहीं, अकेले, Glad Please tell us ना, हम we all would want to know वो journey शुरुआत की. I'm the only son. Yeah. And obviously my family was like pretty reluctant, especially my mother. She was like कि क्या करोगे मुंबई जाके, क्यों करनी है मॉडलिंग. तो फिर मेरे फैमिली वालों ने, मेरे कजिन्स ने, सब ने बिठा के आराम से समझाया कि देखिए वो यू नो ही इज़ इंटरेस्टेड इन दिस, ही इज़ गुड लुकिंग. और फिर मैं बचपन में जिम विम जाने लगा था बहुत कम एज से, फुटबॉलर था तो थोड़ा फिट विट भी दिखता था, तो एकदम लीन मॉडल टाइप नज़र आता था. सो सब ने बोला, एंड देन यू नो आई वाज चोजन फॉर ग्लैड रैग्स. सो देन आई became a part of Glad Rags. Work started coming in. Brands चीज़ें offer करने लगे, you know, ramp walk किसी के लिए shoot. So you know, I said, you know, I can't be traveling from Ujjain to Mumbai all the time. So I need to make a permanent base there. So फिर सबने बिठा के
आराम से डिस्कस करके मम्मी को समझाए कि दैट्स हिज पैशन। और मेरे कजिन ने मुझे बहुत साल बाद बताया, लेकिन उन्होंने धीरे से जाके मेरी मम्मी से कहा था कि परमिशन से चले जान दीजिए, नहीं तो ये बहुत जिद्दी है, ये अपना बैग उठा के भाग जाएगा, then you will be more stressed out. So then I sat with my mother and I told her कि यार mom ये इंजीनियरिंग मैं नहीं करूँगा, फैमिली में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं and even the engineers of my family were suggesting यार कुछ और कर ले। तो फिर फाइनली मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ मुझे ना 2-3 महीने का टाइम दो, मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा। वो मेरा दोस्त अंदर चला गया ऑडिशन देने, वो जो ऑडिशन ले रही थी वो आई, वो कहती यू कम फॉर ऑडिशन। मैंने कहा नहीं, तो बोले बट दिस कैरेक्टर यू विल फिट। ऐसे तो मुझे तो एक्टिंग आती नहीं है, मुझे फिट करके करोगे क्या जब काम ही नहीं आता है, और मुझे उस बात के पैसे कैसे दोगे जो काम मुझे करना नहीं आता। सो देन दे वर लाइक नो वी ऑल लर्न एंड दिस एंड दैट। आई वाज लाइक सी आई एम अ मॉडल और मैं ग्लैडरेक्स किया है और मैं ये सब ब्रांड्स और ये सब कैंपेन्स वगैरह करता हूँ, तो ये सब मुझसे नहीं होगा। इट्स ओके प्लीज फॉर माई डेटा बेस कैन यू गिव मी एन ऑडिशन। मैंने कहा देखो फिर सिलेक्शन कर लिया तो फिर बुलाना मत, मुझे आता नहीं है। तो उसने कहा हाँ प्लीज। तो मैं क्या, मैंने ऑडिशन दिया एंड देन मैं तो भूल गया। और फिर कुछ 1-1.5 महीने बाद मुझे फ़ोन आता है, वी कॉलिंग फ्रॉम बालाजी टेलीफिल्म्स। मुझे क्यों, मुझे तो एक्टिंग भी नहीं आती, और मेरा लिटरली ये रिएक्शन था। एंड देन कसम से हैपेंड दैट कि वी आर हैविंग अ लीप इन कसम से। तो मैंने मॉम को फ़ोन करा, मम्मी ने कहा देखो अगर काम आया है, ऊपर वाले ने काम भेजा है और तुम्हारे पास चल के आया है ना, तो एक बार जाके सुनो, समझो, भले मत करना बट डोंट जस्ट रिजेक्ट इट। तो इसलिए आज भी मेरी टीम भी मेरे पास जो भी ऑफर्स लेके आती है ना, मैं कई लोग होते हैं एक लाइन सुन के यार नहीं यार मुझे नहीं करना, मैं पूरा सुनता हूँ बैठ के, पूरा समझाओ। सो वो आज तक मैं वैसा ही हूँ इन 17 ईयर्स। तो मैं पूरा फैंस पूछ रहे हैं कि ऐसी जॉ लाइन कहाँ से मिलेगी, until unless you don't have the same parents, मुझे लगता नहीं कि मिलेगी। So have the same parents अगर ऐसी जॉ लाइन चाहिए तो। There were a lot of rumors, people used to say anything because see the thing is I'm somebody who's lost in his own world. So people used to think यार इसमें बहुत बड़ा एटीट्यूड है यार, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। So I think वो एक परसेप्शन था, प्लस प्रोफेशनली मैं ज़्यादा पर्सनल चीज़ें कनेक्ट नहीं करता था। आप काम करने गए हो यार, देयर इज समबडी हु इज गिविंग यू अ रिस्पांसिबिलिटी, सो आई थिंक वो बेटर फोकस वो है। सो आई थिंक दैट्स देयर। अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर फ्रेंड्स ऑफ माइन, मैं उनसे जब मिलता हूँ कि यार क्या बना रहे हो, सो वी जस्ट हैपन टू डिस्कस। बोले यार विवेन ऐसा एक शो बना रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है आई बी इंटरेस्टेड। बोले यार तेरे को कास्ट नहीं कर सकते, तेरे लिए शो लिखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे से most of them, they're like we can't cast you into a story। तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी उल्टी है लाइफ में। मुझे बाय गॉड्स ग्रेस मुझे प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स नहीं आई, मुझे कैरेक्टर प्रॉब्लम्स आई हैं शो के लिए। रियली वर्क वेरी हार्ड एंड मल्टीपल इंजरीज होती हैं कई बार ट्रांसफॉर्मेशन में, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इंजरीज, बिकॉज यू आर नॉट एट अ फिटनेस लेवल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर नेक्स्ट कैरेक्टर, नॉट एवरी टाइम। कई बार वेट गेन करना पड़ता है, किसी कैरेक्टर के लिए वेट लूज करना पड़ता है, like for Sirf Tum, so I had to play a college guy. For me, this is just not my bread and butter or just not my job. This is my passion and this is what I do best. That's why a lot of times people say, why you don't turn towards films. So I say, I'm very content and very satisfied with television, OTT, and I think this is something I do my best. तो इंजरीज की आप बात कर रहे थे, तो ये इंजरीज कौन से शो के दौरान हुई? सिर्फ इंजरीज तो हर शो के दौरान होती है, बस वो न्यूज़ में नहीं आती है बिकॉज हम रिकवर कर जाते हैं। I've had multiple injuries. I have a spondylitis issue. I have a L4, L5, C5, C6, shin splits, ankle twists. Harsha, and I'm a child actor. I wanted to ask you that what one advice you like to give me? Never give up. Fans would love to know any 3 things about yourself, the Vivian, which would surprise us, जो अभी तक हमें नहीं पता है या फैंस को नहीं पता है, कि कोई भी 3 चीज आपके बारे में। आई थिंक आप लोग लगभग मुझे 24/7 देख चुके हो, सो ऑलमोस्ट सब कुछ जान चुके हो मेरे और मेरे पर्सनैलिटी के बारे में। हाँ, एक चीज़ है वो, क्योंकि वहाँ बिग बॉस के घर में इतना अवेलेबल नहीं होता था, पर मेरी एक बहुत पुरानी आदत है कि कई बार
depends on mood, but I prefer to do this, that I eat the dessert before food and also after food when I'm not on diet. So wo I like people say, you know, I have a sweet tooth. Mithai is the first love of childhood. That's the true foodie trait, I yeah, believe. yeah, I am. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने 2 रियलिटी शोज किए जो बहुत फेमस है, लाइक खतरों एंड बिग बॉस, तो दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा था और कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जो आज भी आपके बहुत क्लोज हैं? एक आप भूल गई, झलक दिखला जा. झलक दिखला जा was actually, you know, खतरों के खिलाड़ी for me. क्योंकि I'm not so, you guys know, I'm not so fond of dancing, है ना. तो वो जब झलक मुझे ऑफर हुआ तो मैंने कहा यार डांस मुझसे क्यों करवाना है. इतने ब्यूटीफुल डांसर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, आप उन लोगों को ले लो. मुझसे बोले नहीं नहीं, हमको तो तेरे साथ ही खतरों के खिलाड़ी करना है, पर झलक दिखला जा में. एंड झलक ऑफ कोर्स आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज. खतरों वी हैव, you know, we had a great time in Argentina, a lovely time, especially me, Shukla, Raghav, and all of us, like. And of course, Big Boss was a completely different experience, and more than anything, I think Big Boss में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं सीखा हूँ as a human being. और जैसे कभी-कभी, you know, हम इंसान हैं, हमें भी कभी-कभी गुस्सा आ जाता है कुछ चीज़ों पे, पर that is something I learned in Big Boss. So somehow, to a lot of extent, I could overcome my anger and, you know, those moments where I would just lose my cool. So I think Big Boss was a good learning experience. Seeing your daughter come to Big Boss after so many days, I think that was one of the most emotional moments that we got to see. I want to know, what was your reaction when you saw her? मैं तो freeze हो गया था. मैं तो एक तो freeze कर रखा था मुझे. मुझे लगा my wife is going to come and meet me. So it was, you know, somewhat like a surprise for me. I've always said it कि यार मुझे मेरी जर्नी के सबसे, अगर आप one of the best moments अगर आप देखेंगे तो is when my family came, when Nuran came and Layan came. You have 3 daughters. Yes. What are the common traits between you and them that you found? Like, are they your mini-me? I think Layan, we'll start from the youngest. Yeah. So I think Layan, everybody says that she stands like me, her walk is like me, and she loves to eat. And then coming to Alia, Alia is very naughty. I am also very naughty, you know, when it comes to pranking people and doing masti. And I think Layla is somebody who's very inquisitive. So she wants to know more. Like, I have been like that as a child. And she's always asking me questions. So I think these 3, they have some of the other traits from me, you know, being with me and being my children. The actress whom you want to work. Yeah, one of my best co-actors. ये पूछ सकते हो? Yeah, I want to hear that. मेरी personal favorite obviously Rubina है. Wow. Your pillar of support and strength in your life. So you know, for me, my source of inspiration, my backbone is certainly my wife and my family and friends. And I think more than anything, it's my kids. Nuran is one of the best things to happen to me in my life. If you get to play another supernatural character like Abhay in Pyar Ki Ek Kahani, what would that character be? I'd love to play a vampire, by the way. Yeah. Season 2, Season 3. Inshallah. We are waiting. You know, there's actually okay. Let me spill some beans. Oh, wow. But there are actually a lot of concepts being discussed currently with me and my team, with a lot of people, which will be very exciting for you guys. Because I know what my fans love. It's your favorite football club. And since Ronaldo has moved to Al Nassr, which is in Saudi, I believe. So any plan of watching him live and all? This was my question to you. See, I don't have any particular football club, you know, that I'd go for. But certainly, you know, I love all the talented football players all around the world. Okay. Yeah, of course, you know, Ronaldo is somebody, he's a great human being. Yeah. And I personally love him. And I think he's very hardworking. Yes. Very talented. Yeah. And I think he's somebody in the football fraternity who's got it the hard way. Hello. My name is Nishta. My name is Vivian.
तो आपसे सवाल पूछने से पहले एक रिक्वेस्ट थी जी मेरी, जी बोलिए। आप प्लीज एक बार बोलो ना, मधुबाला वीवी आहा। बीवी थैंक यू वेरी मच। और मधुबाला सुन लो, मधुबाला आहा। What are those from all the 4 shows? काफी सारे रहे हैं ऐसे तो, मतलब there have been many, but I think there's one shot which I can never forget. You guys have seen प्यार की एक कहानी's first promo? Yes. You have seen a tight close-up जब मैं face ऊपर करता हूँ? Yes. I think वो मेरे करियर का अब तक का मेरा पर्सनल फेवरेट मोस्ट मेमोरेबल शॉट रहा है। मतलब वो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं many of your friends wants to see you in upcoming season of Broken But Beautiful season 5. So would you be interested if you would be offered? See, I am interested in every role जिसके साथ मैं जस्टिस कर सकता हूँ, just because of the sake of working, और you know कि हाँ मुझे रेलेवेंस मुझे रेलेवेंस चाहिए, तो ऐਵੇਂ ही कुछ भी उठा के करते हैं, मैं ये नहीं हो सकता। अगर मैं रोल के साथ जस्टिस करूँगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा, और बाकी अब आपने बोल दिया है तो मैसेज तो पहुँच ही जाएगा। Like in all the interactions you had mentioned about Rekha ji, Amitabh Bachchan and that Rajesh Khanna sahab. So what is that one thing that inspires you the most about them? You know, आप लोगों ने एक चीज़ देखी है कि ये जो 3 नाम आपने लिए हैं, you know, ये लोग मतलब हम तो बड़े हुए हैं इन्हें देख के। मतलब राजेश खन्ना साहब में गॉड ब्लेस हिम, वो लोग आज भी उतनी ही मेहनत करते हैं। You know, I feel sad that you know a younger generation thinks कि यार हम थक गए हैं। Mr. Bachchan is like he's sharp on time, he's before time actually, Yes, and he's still working very hard. So I think this is what I adore and I respect about them. Shabir, Dino, Yeah, Arjun, everybody. You know, Ranveer, football Abhishek. तो मतलब बचपन का प्यार है ना। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? Somebody who's really good and who's really agile and you know fast, it's Tiger. Вивиан вспоминал, как он проходил пробы, и говорил, что у каждого актера есть своя история борьбы. В первые годы карьеры он сталкивался с тем, что дверь студии открывалась, его видели и сразу же закрывали. Актер вспоминал случаи, когда его даже не допустили до пробы, просто взглянув на него. Он неоднократно слышал «нет», и вы нам не подходите, еще до того, как мог показать свои навыки. Также он отметил, что отказы закаляют. Реакция на отказ – ключевой момент в жизни актера. Любители реалити-шоу с нетерпением ждут новый сезон «Кхатро ке Khiladi 15», одного из самых экстремальных шоу Индии. Ведущий Рохит Шетти снова готовит захватывающее испытание для участников, среди которых, по слухам, могут оказаться звезды Bigg Boss, Элвиш Ядов, Чум Даранг и, возможно, Ори. Официального подтверждения даты выхода пока нет, но по данным инсайдеров, съемки начнутся в мае 2025 года. Популярная страница на X Bigg Boss Talk опубликовала список приглашенных знаменитостей для «Кхатро ке Khiladi 15», в котором среди прочих упомянуты Элвиш Ядов и Авинаш Мишра. Вивиан Сена принимал участие в 7-м сезоне «Кхатро ке Khiladi», ведущим которого был Арджун. Недавно он выразил желание снова стать частью этого шоу с Рохитом Шетти. Я думаю, участие Вивиана в этом шоу обрадует его поклонников. Удачи! Франшиза Крис стала одной из самых знаковых и успешных супергеройских серий в Болливуде, завоевав сердца нескольких поколений кинозрителей. Однако фанаты, с нетерпением ожидавшие Крис 4, были разочарованы, поскольку фильм пока остается в производственном тупике. Недавно режиссер Ракеш Рошин признался в интервью, что получение крупных средств для съемок фильма действительно стало для него проблемой. Франшиза Криш, в которой снимается Ритик Рошен, является одной из самых успешных супергеройских серий, вышедших в Болливуде. Однако с каждым разом масштаб производства и требования к визуальным эффектам стремительно растут.
Ракеш Рошан отметил, что высокий бюджет, необходимый для реализации грандиозного видения фильма, стал главным препятствием. Мы работаем больше над историей, потому что бюджета не так много. हम इसलिए कहानी पे काम कर रहे हैं हालांकि बड़े-बड़े सीक्वेंसेस Однако в фильме будут крупные сцены, пусть не 10, но 2 точно будут. Почему Крис 4 требует огромного бюджета? Крупные супергеройские фильмы требуют огромного бюджета из-за визуальных эффектов, экшн-сцен и высоких производственных затрат. Последние годы использование VFX в Болливуде увеличилось, но это сопровождается высокой стоимостью, если стремиться хотя бы приблизиться к голливудским стандартам. Когда выйдет Крис 4, несмотря на финансовые трудности, Ракеш Рошан уверен, что Крис 4 станет реальностью. Он заверил фанатов, что усердно работает над получением необходимых средств и вернет супергеройскую сагу на большие экраны как можно скорее. Пока фанатам остается набраться терпения и надеяться, что любимый болливудский супергерой вернется с долгожданным камбэк в ближайшее время. तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. А на этом все, мои дорогие друзья. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы не успели это сделать, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А я с вами прощаюсь. До свидания, до побачення. Всего доброго.